So today we will discuss magnetic field due to a circular segment of wire. Magnetic field due to a circular segment of wire. This is our topic. Segment of wire means your wire may be like this, complete circle of radius r or semicircle of radius r, or this is a segment of wire making an angle theta at the center, and theta may be 30 degree, theta may be 40 degree, or theta may be 50 degree, or let us divide this into four parts. So what is the magnetic field due to this segment, this segment, this segment and this segment? Clear? Any clear? Circular है, कुछ ऐसा हो, this is the and this is the center. So what is the magnetic field at this point? If angle is 60 degree. Clear? So we will derive a formula to find the magnetic field due to any shape of circular segment. इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, थीटा 30 डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा. Got my point? So this is our topic. So magnetic field due to a circular segment of wire. Clear? So what? Consider, take a general case. Take a general case. This is a circular segment of wire, and this is the center. Clear? This is the node part of the wire. This ये part हिस्सा नहीं है वायर का, ये खाली this is the segment, this is the segmental part. ये खाली है बाबू, ये सेगमेंट है, यहाँ पर सेंटर है, and current through the wire is I. So I is the current. So I is the current through the wire, and R is the radius. Let us assume R is the radius. C is the center of segment, and R is the radius. R is the radius. R is the radius of wire. Clear? So R is the radius of wire, I is the current, and we have to find the magnetic field due to this segment at the center. So question is magnetic field due to segment at the center. So what? We will apply Biosavart's law. Biosavart's law means we will take a small element dl and current element idl, and we will find the magnetic field due to this current element. Clear? And that is dB, and dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin of theta upon r square. So this is the magnetic field due to a small element, and then we will integrate this dB with a proper limit to find the magnetic field due to whole segment, which is equal to integration mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. Clear? So ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करेंगे, एक बार लिखो, फिर मैं बताता हूँ. Case there is this is a segment, and this is your center. Current is I, and radius is r. Clear? This is the segment. So consider a dl element here. The magnetic field and current element will be ideal, and direction will be what? Tangent na. This is the direction of ideal. Clear? So what? Ideal is the current element, and direction is tangent. Direction will be tangent at point na. इसी पॉइंट पे टेंजेंट होगा. Clear? Then magnetic field dB due to this element ideal will be equal to mu naught upon 4 pi I dl sin of theta upon r square. Because radius is the r, here this is the distance, so this will be what? R na, and vector and r vector is mod r equal to r na. Clear? So what? Angle between
ideal and r vector is 90 degree na. Angle between ideal and r vector is 90 degree because this is the ideal and this is r na, a tangent to the circle, and line joining the center and the point will be perpendicular to each other na. If this is a circle and you are drawing a tangent over here and if you are joining this, so this will be always 90 degree ना. यहाँ पर एक टेंजेंट है, इसको ज्वाइन करोगे क्या, दिस विल ऑलवेज 90 डिग्री. सो इस एलिमेंट के लिए क्या होगा, एंगल 90 डिग्री. सो होगा क्या कि dp will be equal to mu naught upon 4 pi I dl sin 90 upon r square, which is equal to mu naught upon 4 pi I dl upon r square. Clear? This is db. Now there is element over here and db is what? db is perpendicular to the board na, inward na, inward and perpendicular to board. Again there is a point, consider any element over here, dl एक यहाँ लग लो दूसरा आइडियल. उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, d ideal will be this direction and r will be this direction. Again angle is 90 degree. Means for each and every element on this segment, for each and every element on this element, your theta between r vector and ideal element will be always 90 na. So for each and every element, for each and every element on the segment, angle between ideal vector and r vector will be 90 degree. Clear? Clear? So for each and every element, the angle between ideal vector and r vector is 90 degree. Also for each and every element, magnetic field will be perpendicular to the board and inward. इसके एलिमेंट में क्या होगा, अंदर. इसके लिए क्या होगा, यहाँ लिख दे अंदर, यहाँ लिख क्या होगा, अंदर. So for each and every element, for each and every element on the segment B will be, DB will be perpendicular to board, perpendicular to board and inward, and यानी कि सब डीएल के लिए क्या होगा, ये वाला सेम होगा म्यू नॉट अपॉन 4 बाय आइडियल अपॉन थीटा. एंड ड्यू टू ऑल डीएल एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, सो बी ड्यू टू होल एलिमेंट विल बी जस्ट देयर सम ना. सो बी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन db ना सिंपली, एंड विच इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl upon r square ना. एंड I upon r is constant, I upon r is constant. so b is equal to, चलो इसको लिखो यहाँ पे लिखो, b is equal to this ना, b is equal to integration db is equal to integration mu naught upon 4 pi I dl upon r square. so what, these are constant ना, तो बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, mu naught upon 4 pi I by r square integration d, and integration dl is what, this is what, arc length ना. This is nothing but this arc length ना, arc length. Clear? So what, ऐसा कर लो, r and this is arc length, this is integration dl. Clear? And this is theta. If this is theta, then theta will be equal to arc length upon radius. So what, arc length will be equal to theta into radius ना, into equal to theta r ना. सिंपली हम arc length की रेडियस यानी कि b is equal to mu naught upon 4 pi I by r square into arc length. This is one formula. If arc length is given, you can easily find the magnetic field. सेमीसर्कुलर है तो 2 pi r ले लेना, फुल है तो 2 pi r ले लेना. Clear? Or you can also write b is equal to
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर and in place of r plus you can write theta r na. So what b is equal to mu naught upon 4 pi I by r. कोई दिक्कत ये से कर दिया. So what b at center is equal to mu naught upon 4 pi I by r into theta. This is your magnetic field at center due to segment. Clear? And theta is the angle subtended by segment. So theta is the angle subtended by segment at center, and theta is in radian. Theta is in रेडियन. अगर डिग्री में उसको रेडियन में चेंज करके उसको पुट करोगे तो आ जाएगा. चलो फिर कैसे कुछ देखते हैं. करो इसको. क्लियर हुआ बाबू? तो थंब अप करो. किसी को डाउट है तो बताओ. अगर थंब अप करो तो एक बारी. क्लियर सबको? बोलो. यहां तक क्लियर है? गुड. चलो कर लिया. कर लिया बाबू? इधर ऑनलाइन कर लिया सबने? सो व्हाट? So B is equal to mu naught upon 4 pi I by r square into arc length. This is one formula. You can apply this. Or in terms of arc length, our B is equal to mu naught upon 4 pi I by r into theta. Clear? This is other formula. So if theta is given, apply this. If arc length is given, apply this. Let us discuss some special cases. Let us discuss some special cases. And this is not in your syllabus. लेकिन ये जरूरी है करना. क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो बोर्ड से. सिलेबस तो दूर दूर पे बहुत ही खड़ा है इस बार. अरे बोर्ड पे अलग पता चल रहा. So what? For complete circle, arc length is equal to 2 pi r and theta is equal to 2 pi. पुट करो दोनों में, दोनों से आएगा. b is equal to mu naught upon 4 pi I by r into arc length की जगह 2 pi r लिखोगे ना बाबू? r से r गया, 2 pi से 2 गया, कितना बचेगा? mu naught upon 2 I by r. ये आ गया p, जो कि पढ़ा था हमने कल. क्लियर? दूसरा वाला फॉर्मूला लगाओ. b is equal to mu naught upon 4 pi I by r into theta, which is equal to mu naught upon 4 pi I by r into 2 pi, which is equal to mu naught upon 2 I by r. ये भी हो गया. कोई दिक्कत? तो दोनों से कर लेना. फॉर सेमी सर्किल, b is equal to mu naught upon 4 pi I by r square into pi r हो जाएगा. सिंपली सेमी सर्किल के लिए अगर r की बात करोगे तो
तो r से r गया, पाई से पाई गया, कितना होगा म्यू नॉट अपॉन 4 i बाई r। ये हो गया। एंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो। एंगल वाला क्या होगा, b इक्वल टू सेमी सर्कल की बात कर रहा हूं मैं, सेमी। सो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i बाई r इनटू थीटा। थीटा इक्वल टू पाई ना, तो पाई से पाई गया, बचेगा कितना म्यू नॉट अपॉन 4 i बाई r। क्लियर बेटा सबको? क्लियर तो थंब अप करो एक बारी। ये सारी चीजें क्लियर सबको? गुड। सो ये बाबू किसी भी एंगल के लिए 45 डिग्री, 30 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, कीप दिस इन माइंड दैट थीटा शुड बी ऑलवेज इन द रेडियन। तो ये आसान है और काम करना। जैसे मान लो 40 डिग्री का फाइंड करना है तो उसका रेडियन वैल्यू ले लो। अगर 50 डिग्री का फाइंड करना है, रेडियन वैल्यू ले लो, क्योंकि रेडियन इजी है गेन करना ना। क्लियर? या 35 डिग्री का लेना है, उसका रेडियन वैल्यू ले लो, खाली रेडियन लेना है। क्लियर? रेडियन लेना है। क्लियर? सो ये हो गया बाबू। एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस बायस ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लियर? एम्पियर सर्किटल लॉ। सो करो और बाय, सी यू टुमारो।